Today we are going to discuss the third property of a liquid state, which is a vapor pressure. By definition, vapor pressure is a pressure exerted by the vapors of a liquid when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. So, the explanation of vapor pressure, how the pressure is exerted by the vapors above the surface of a vapor. For example, when we are taking the liquid in a closed container, the kinetic energy of all the molecules is not same. The molecules which are nearer to the surface of a water has greater kinetic energy as compared to the molecules which lies at the bottom or at the bottom of the container. So those molecules which has greater kinetic energy or greater average kinetic energy will overcome the intermolecular forces of attraction between the molecules of water. So by overcoming the intermolecular forces of attraction, they will leave the surface of a water. Now the container is closed. So when they leave the surface of water, they start gathering at the space above the liquid. अब इस स्पेस में वो जमा होने शुरू हो जाएंगे. काइनेटिक एनर्जी जिस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी कैसे साहब, वो जब कोलाइड करते हैं और सरफेस वाले ज़्यादा कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी एंड सरफेस को लीव कर देंगे. तो आपके पास कहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे? बिकॉज दिस कंटेनर इज क्लोज्ड, सो दे स्टार्ट गैदरिंग स्पेस अबव द लिक्विड. नेक्स्ट क्या होगा? दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एवेपोरेशन. देयर आर सम लिक्विड्स, जब वेपर्स यहाँ पर गैदर हो जाएंगे, सो आपके पास लिक्विड इज इन क्लोज कंटेनर. सो वेपर्स मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे बैक टू द सरफेस ऑफ लिक्विड. कैसे करेंगे? आपके पास वेपर जब जमा हो रहे हैं, तो जब वेपर स्टेट में चले जाएंगे, कुछ वेपर्स अपनी एनर्जी को, इन्होंने एनर्जी को क्या किया था? गेन किया था. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई थी, काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर देंगे, एनर्जी लूज़ करेंगे और अगेन कन्वर्ट बैक होंगे इनटू लिक्विड स्टेट में. सो जब कन्वर्जन बैक ऑफ लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट हो रही है इनटू लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इन अदर वर्ड, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस. जब कुछ अमाउंट में वेपर्स आपके पास आ जाएंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अब जब आपके पास दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं इन क्लोज कंटेनर, एवेपोरेशन भी हो रही है और कंडेंसेशन भी हो रही है. वाटर के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और गैशियस वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अगेन कन्वर्ट बैक हो रहे हैं इनटू लिक्विड स्टेट बिकॉज द कंटेनर इज क्लोज्ड. नाउ अ प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द वेपर्स. अब कब प्रेशर डेवलप होगा? जब रेट ऑफ एवेपोरेशन आपके पास इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के. सो वेपर्स which are present above the surface of liquid will exert a pressure on the surface of liquid, and this pressure is called vapor pressure. So as the rate of evaporation increases, the rate of condensation also increases. A state is reached when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. This state is basically called an equilibrium state. Liquid, first, when it is placed in a closed container, evaporation will takes place and it is converted into vapors. When few vapors or some vapors are formed, then vapors are again converted back into the liquid state by the process of called condensation. Therefore, vapor pressure can be defined: the pressure exerted by the vapor of a liquid in equilibrium state. And what is equilibrium state? When the rate of condensation becomes equal to the rate of evaporation. There are various factors which affect the vapor pressure of a liquid. The first factor which affect the vapor pressure of a liquid is nature of a liquid. The vapor pressure of a liquid depends upon the nature of a liquid. Polar liquids having high boiling points and exert little vapor pressure at a given temperature. Why polar liquids having high boiling points exert low vapor pressure? Because evaporation rate will be very low, because in polar molecules or polar liquids, strong intermolecular forces exist between the molecules.
while non-polar liquids having low boiling point liquids and exert more vapor pressure at the same temperature. For example, water has less vapor pressure. Water का vapor pressure low होगा as compared to the acetone at the same temperature. The next is intermolecular forces. Stronger the intermolecular attractive forces of in a liquid will be its tendency to evaporate. So lesser will be its vapor pressure at a given temperature. For example, the vapor pressure of ethyl alcohol is higher than that of water because in water intermolecular forces are stronger enough as compared to ethyl alcohol at the given temperature. Water molecule consists are in water strong hydrogen bonding is present while ethyl alcohol में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होती है या ना होने के बराबर होती है. सो इजीली इवेपोरेट, जहाँ जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लो होंगी तो वो आपके पास इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे. जब इजीली इवेपोरेट होगा तो वेपर प्रेशर भी ग्रेट एक्सर्ट करेंगे. नेक्स्ट is size of molecule. Those liquids which have small size are easily evaporated. वो liquid जिनका size molecule का size छोटा होगा वो आसानी से evaporate हो जाएंगे as compared to those liquids which have large size. Small size molecule liquid form more vapors than a big sized molecule liquids at the same temperature. For example, pentane has a small sized molecule and decane is therefore a large molecule. Therefore pentane, अब small molecule pentane है तो इसका क्या होगा, vapor pressure greater होगा as compared to the vapor pressure of decane, and pentane vaporizes rapidly and exert more vapor pressure than decane at the same temperature. Some compounds and their vapor pressures at 298 Kelvin is given, or 25 Celsius is given. First is the chloroform. Formula of chloroform is CHCl3 and its vapor pressure is 170 millimeter of Hg at 25 degrees centigrade. Carbon tetrachloride CCl4, its vapor pressure at 25 degrees centigrade or 298 Kelvin is 87 millimeter of Hg. Water, the standard vapor pressure of water is 18 mm Hg at 298 Kelvin or 25 Celsius. Glycerol and its vapor pressure will be 0.00016 millimeter of Hg at 25 Celsius. The next factor is temperature. If we increase the temperature of a liquid, increases the average kinetic energy of molecules. The intermolecular distance among the molecules of a liquid increases by increasing its temperature because the movement will become faster, which causes decrease in intermolecular attractive forces between the liquid molecules. Hence the rate of evaporation of a liquid increases and thus vapor pressure increases.